All right, guys, welcome back to London session live stream. Let's wait about 5 minutes or so, see how people are joining and all, and let's see how things are going. Okay. Before also, let's do some top to bottom analysis before we jump into any trades. So I can see that daily candle just open up. So yesterday daily candle just closed as doji. I can see that after that it did continue to moved up. Let's see. And we'll see how things goes. Okay. Okay, sorry. So as I was saying, price did break the daily high here. Looking at the 4 hour time frame, I can see that we have a break of structure. Price is retesting that and rejecting at the moment. 4 hour is new open up. So going back to 1 hour here, I'm seeing that price is also rejecting this levels. So I'm just gonna mark this here level, because if price is rejecting, okay, we need to see on a smaller time frame like 30 minute, 1 hour, 30 minute and 5 minute or so. Now on 30 minute, I can see that new 30 minute candle just open up. Okay, it's creating a top wick. If it's break the low and tap into this zone, and once we see a rejection, then that will be a pretty amazing entry point if we are looking for buys. And I see that price had a small gap up. Now since then we are moving up, but at the same time I have a feeling that this could be the last leg to move up. As because of the 4 hour candle, I feel like it just created a small top wick and it just pushed down. So there are two options I can see here. Either it move up, break the high, and then flip bearish and move down. Okay, that is what I'm thinking. But at the same time, looking at the smaller time frame, currently what I see is that price is consolidating. Okay, in this small range. Okay, wherever we get the break of structure here, if we get a break of structure below, that would be amazing to take a buy here, putting SL exactly below these levels. That would be a pretty good entry zone. This is around 150 pip of a range. Okay, so from here to here. Now at the same time, I want to enter around this level, right? So if I take an entry here, my SL, it for safest side, my SL will be 100 pips. To be more, you know, better for RR risk management and all, I can put 70 pips as an SL. So that is the overview. I mean, that's what we can look for today. Okay. But yeah, I am looking for, price to tap down into this before taking any further entry points. If not, then price can just move up here as well. But to be honest, if I take a buy here, I will close it immediately around 60, 70 pips. Pretty interesting, because 30, see, look at the 30-minute time frame. Open up, immediately moving up. Now if it's not breaking the lows and not tapping into the zone, meaning that is low probability that price can just tap here and then flip bearish. That's what I think. I mean, we can look for sells as well if you think about this till here, but the reason I'm not taking a sell is because of a 4 hour candle. It moves up, break its own high, it could flip this till here. We don't want the best entry point, best way of looking at this price action right now. If we break its own high, we can target around 60 pips till here, putting SL with a really minor SL. Okay.
Another entry points that I see is to take a buy from here to the whole flip. That is a whole another thing. But if we don't get that, then we're gonna wait. Okay. This does look good, to be honest. This entry point does look good. Putting a buy here, putting SL here, and boom, we can target the all-time high. But to be honest, like whenever we have gotten a pretty big candle, we can see that price have continued move up around. Let's see here. We got a big candle closed. We get a move up around 80 pip. We got a big candle close. We still moved up around 80 pips. Okay. We got a pullback. Not a big candle close. Big drop. Okay. We got a big candle close this one here. So I'm expecting, let's say, assuming from here to here, 80 pip is around here. So we can still tap the highs here. But as I said, I'm not looking to take a buys here. I'll be looking to take a buy from here. If you want, I can just scalp a little bit, putting a higher to here, right? Something like that. Anyway, now that's a whole kind of analysis and all. So let's see. Should we take a scalp, Joe? Like, how much is this? 60 pip of a scalp? What do you guys think? Does look good though. The analysis there. I mean, मैं तो ले लेता भाई. I mean, मेरे को ये बहुत सही लगा structure, but I will wait क्योंकि मैं अभी just market को observe कर रहा हूँ. I just started watching the charts, so I'm gonna wait a little bit. अभी देखेंगे, wait करेंगे थोड़ा, देखते हैं then क्या होता है. हम तो still waiting यार. मेरे को तो still लग रहा है कि ये 30 minute flip करेगा. So possibly let's see, 1 hour भी. I think 1 hour bearish closure देगा and next 1 hour will tap into this zone and push up. That could be a possibility. See, we had rejections here. 5 मिनट पे कैंडल क्लोजर कैसा है? bearish जा रहा है. अभी तो 1 मिनट बचा है. Let's see how it does close. Then we will look accordingly. Because हमें यहाँ से multiple rejections भी मिले हैं ना. तो at the same time अगर तुम यहाँ पे कोई भी buy entry plan करते भी हो तो be careful ऐसा. Let's see. Actually, you know what? Let's take this scalp here. I'm gonna take a chance here, okay, guys? So if you want to with me, then you can. If you don't want to, it's totally up to you guys. I'm gonna take a chance here. I want to take a chance on this trade. I'm taking a buy here. Overall DP is there. Okay. Let's see how it goes then. Actually, तुम इतना बड़ा SL नहीं भी रखोगे, then it is fine. I think this will do. So we took a buy here. हम लोगों ने यहाँ पे buy लिया, ठीक है. हमारा SL exactly यहाँ पे है, around 59 pips का. Our target is around 100 pips, around that much. If it's work out well, great. मेरे अकॉर्डिंग हम partial close करेंगे
पार्शियल क्लोजर है ना, मेरे अकॉर्डिंग ये एरिया में करना इज बेस्ट, बिकॉज वहां पे रिजेक्शंस आ सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी कहाँ पे, लेट्स मार्क दिस जोन। दिस इज एरिया वेर वी कैन गेट अ रिजेक्शंस, सो पार्शियल क्लोज हमें इधर करना है, ठीक है। Let's see now. All right, so I can say that price is already moving. We are already up around, good amount of pips here. I think around 20 pips. So we will close our partial around 50 pips as usual, and then we'll let the rest run around 100 pips. Okay. The only thing is that if this 1 hour flip bullish, then we have whole thing to cover up. But if it doesn't flip bullish in next 18 minutes, then we are done for, because that means the 30-minute will create a bottom wick. We don't want that. That's why my SL is exactly below the 30-minute here, that we don't want this to flip bearish. We just want it to continue pushing up, and that will do for London session, to be honest. I think price is just creating a high here, but at the same time we want something strong move, some kind of a, like this we had this strong candle. If this could do, it would be amazing. Otherwise this will just exhaust, meaning that it will just move slow, which is not something I like. you know it just drains you out when you are in a trade, and you know but ठीक है, let's see, देखेंगे, अभी तो हम वेट करेंगे, let's see how it does play out. Let's see, I mean, currently we have 15-minute closure में हमें around 2 मिनट बचे हैं. 2 मिनट में पॉसिबली हमें छोटा पुल बैक मिल सकता है, वी कैन क्लोज अराउंड दिस लेवल, बट ठीक है, लेट्स सी कि अगर स्ट्रांगली मूव करता है तो ये. तब तक हमें वेट ही करना पड़ेगा, देयर इज नो चांस. आज लगता है कोई ट्रेड नहीं कर रहा है, देयर आर रियली लेस पीपल. आज क्या सब छुट्टी पे है? आज वैसे भी, हाँ, आज वो उत्तरायण है, मकर संक्रांति, एवरीवन इज एंजॉयिंग देयर टाइम. कोई नहीं, एंजॉय एंजॉय. हम यहाँ पे थोड़े पैसे कमा लेते हैं, तब तक लॉस होता है तो लॉस भी कर लेंगे. Also keep in mind today in New York session we have a guest coming in, so मजा आएगा. He's from US and he also have a great knowledge about trading. So all right, we are pushing. Keep in mind हमें यहाँ पे partial close करना है, ठीक है. So जैसे ही new 15-minute candle अगर open होता है, push लेता है to the top side till here, partial close करने के लिए be ready. Around 20 seconds में we'll have an idea. All right, price is still, you know, we want price to tap into this level. Once it does tap, then we're going to close partials. Otherwise, there is no point. We are going to close partial, yeah, here, 50 pips. So as soon as we go in this, area here, close partials. Okay.
because that is your rejection point. If this 50 minute create a long bottom wick, yeah, then it's fine, but we don't want that long. We just want it to come near to our entry point, or maybe till here max, not more than that. Okay, doesn't look like it will even come there. Let's see. Okay, it's heading, guys. So be careful where you want to close your partials as soon as we tap that. All right, close your partial as soon as we tap that line. Okay. Okay, I'm closing my partials now. 50% closed. Now let the rest run. Let the rest run. Let's see how much we can target here. Amazing. Amazing. Let's go. Let's go. Now we just need to wait. 50% is closed here. Let me just mark it for you guys so you don't get confused. We close 50% around here. Okay, so I'm gonna write it down. 50% closed here. Okay, 50 pips. I think तो हम हाई ले ही लेंगे, but at the same time let's see. 50 पिप्स से तो ज़्यादा ही अभी मूव कर रहा है. इफ यू हिट द ऑल टाइम टीपी, मैं बोलूँगा वहाँ पे पूरा 80% सिक्योर कर लो, फिर पूरा चलने दो. मेरा सजेशन यही है, बिकॉज प्राइस बुलिश रन में है. तुम्हें नहीं आइडिया कि कहाँ कहाँ तक ये टारगेट कर सकता है, समझ रहे हो? All right, amazing. See, amazing. आई थिंक हमारा पूरा पूरा टीपी आने वाला है इस बार. हर बार हम 50% क्लोज करते हैं, फिर ब्रेक इवन हिट हो जाता है. मेरे को लग रहा है इस बार आ रहा है पूरा पूरा टीपी. ठीक है, देयर वी गो, कमिंग इन. आई थिंक ये हमारे पूरे 100 पिप्स जाएंगे, अगर ये पूरा हाई ब्रेक करता है तो. दैट विल बी द 100 पिप्स, बट लग नहीं रहा है. इट्स रिजेक्टिंग नाउ. लास्ट 11 मिनट बचे हैं 1 आवर क्लोज होने को. ठीक है, ये पूरा पूरा. अब मैं यहाँ पे भी, अगर मैंने पहले तो मैंने मार्क किया था ये जोन, राइट? ये जोन मार्क किया था रिजेक्शन के लिए. यहाँ पे टैप नहीं किया, तो ये हमारा फेल जोन हुआ. ओके, इन दैट टर्म्स की जो जोन होते हैं ना, इट्स रियली इंपॉर्टेंट. ये जो जोन है ना, यहाँ से जो रिजेक्शन आता है ना, वो ऐसा बहुत ही क्रेजी वाला होता है. ठीक है, बट वो ज्यादा पिप्स भी कवर करके थे यार. बट हियर वी डिडंट गेट दैट. हमें यहीं से रिजेक्शन मिल गया, पूरी बुलिश कैंडल बॉडी बनी. उसके बाद आई थॉट, क्योंकि 5 मिनट पे भी एंड ऑल जा रहा है, तो मेरे को लगा कि नहीं, ये पॉसिबल है कि इतने बुलिश रन में है. लंदन स्टार्ट हो चुका है एंड इट द ड्रॉप. एंड ये पूरा इधर है ना, मल्टीपल रिजेक्शंस है, तो वो काइंड ऑफ जितने लोगों ने सेल लिए होंगे ना यहाँ पे, आफ्टर हैविंग दिस ड्रॉप, थिंकिंग के प्राइस यहाँ से मूव कर सकता है, उनके सबके एसएल यहाँ पे होंगे, या तो यहाँ तक होंगे. थोड़े अगर मूव देख, अगर थोड़ा रूम देके भी देखे, तो 42 समथिंग समथिंग जाएंगे ऐसे. तो मेरे अकॉर्डिंग उतना उतना जा सकता है अभी भी प्राइस. तो दैट विल बी अवर टारगेट हियर. ओके, कीप इन माइंड कि मैं ये फुल रिस्क में गया था, डायरेक्टली 1 लॉट यूज किया, तो अभी मेरा 0.50 स्टिल रनिंग. तो लेट्स से. हाँ, बट अब हमारा अगर एसएल हिट भी होता है तो विल बी एट ब्रेक इवन. ठीक है, मतलब लॉस नो प्रॉफिट. बट अगर हम लोग अगर एसएल बीई पे रख देते हैं तो कोई इशू नहीं है, फिर तो मतलब नॉट एट ऑल इशू. द थिंग इज कि मेरे को चाहिए कि ये ना हाई ले यार. एज लॉन्ग एज इट वोंट टेक द हाई, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते. मेरे को चाहिए ये एक बार हाई ले, देन यहाँ से बूम. बताओ इन द चैट इफ यू आर वाचिंग, तुम लोग ने ट्रेड मिस किया या लिया? एनीवन टुक द ट्रेड और यू मिस्ड इट?
ओके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमारा जो लास्ट रेट था विच वाज दिस हियर, ओके, नेगेटिव 80 पिप्स, राइट? यस। कल हमारा सेश न्यूयॉर्क नहीं, ये तो लंदन में है। न्यूयॉर्क में हम लोग ने ट्रेड लिया था, ओके हाँ, आई कैन सी, लिया था गाइस, लिया था। इधर इधर ये तो हम लोग ने स्कैल्प किया था, तो हम लोगों ने रिमूव दिस, बट ये हमारा मेन ट्रेड था विच टैप 100 पिप्स, जहाँ पे हम लोग ने 80% सिक्योर किया था, फिर पूरा ब्रेक ही बंदा, तो ठीक है। तो वी कवर्ड दिस प्लस 20 पिप्स, मतलब ओवरऑल कल का दिन प्लस 20 पिप्स पे गया है। आज का समझ लो ऑलरेडी प्लस 50 पिप्स चल रहा है। अगर ये पूरा टैप करता है 120 पिप जाएगा फिर। बताओ, कौन कौन तुम्हारे को डेली लाइफ में आके ज्ञान भी दे रहा है एंड काम भी करवा रहा है। लाइव स्ट्रीम करने में ना बहुत बोल रहा हूँ दिमाग खराब होता है, टू बी ऑनेस्ट, मैं तो बोल रहा हूँ। सब नहीं कर रहे हैं, मतलब ये जो लोग कर रहे हैं ना, मैं उनको सैल्यूट है भाई। तुम हर रोज आके टाइम टू टाइम एक लाइव स्ट्रीम कंटिन्यू करना इस जेन्युइनली डिसिप्लिन वाला काम है, समझ रहे हो? What is my equity? Bro, I have similar kind of an equity. So you can see, if it's your real money, it's not a funded account, right? Then, and that is the amount of money that you cannot afford to lose, then use lower lot size. Okay, like 0.50, 0.30, something like that. But depending on, I usually change my lot size depending on the sessions, depending on the setups. So right now you can see that I increase my lot size. मैं मेरा पूरा रिस्क होता है विच इज वन लॉट, तो मैंने डायरेक्टली वही लिया। ओके, 0.50 स्टिल रनिंग। वाई? पहला, कि मेरे को आइडिया था कि अगर प्राइस यहाँ से जाएगा तो इट विल बी यू नो विथ नो ड्रॉ डाउन, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस कंसोलिडेशन। अगर ये कंसोलिडेशन में टैप करके भी जाता है दैट इज टोटली फाइन, बट अगर ये उससे नीचे आता ना तो मैं कट ऑफ कर देता। मेरा एसएल कम था, समझ रहे हो, पर मेरा टारगेट वॉज 120 पिप्स, 100 पिप्स के आसपास, तो विच इज स्टिल गुड। तो सेटअप के अकॉर्डिंग, आरआर के अकॉर्डिंग मैं मेरा रिस्क इंक्रीज करता हूँ, डिक्रीज करता हूँ, और ये सबके लिए सही नहीं होता है। जब मैं स्टार्टिंग में ट्रेड करता था, ठीक है, तो मैं मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड या लॉट साइज वो स्टैटिक रखता था, चेंज नहीं करता था, नो मैटर के कौन सा सेटअप हो, ठीक है। पहले मैंने खुद को, मेरी जो प्रॉफिट प्रॉफिट वाला फैक्टर होता है ना, कि वो होता है एक बार बढ़ेगा, जब तक मैं प्रॉफिट बनाता नहीं हो गया ना, एटलीस्ट मेरा स्कोर जो है वो 50% अबव नहीं गया ना, तब तक मैंने चेंज नहीं किया। जैसे ही 50% अबव जाता है, देन यू नीड टू मॉडिफाई थिंग्स। मैं देखो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग तुम्हारे कौन से ट्रेड रहे हैं विच आर प्रॉफिटेबल एंड विच आर नॉट प्रॉफिटेबल। जैसे कि उस दिन मैंने तुम लोग को बताया डिस्कॉर्ड में क्लियर कि मेरे डिस्कॉर्ड में मैं पूरी ट्रेड जर्नल करता हूँ, ठीक है। ये देखो जनवरी का 2026 जो हमारे ट्रेड्स है वो पूरे पूरे जर्नल होता है। अब देखो यहाँ पे टीपी हमारा 160 पिप का था, बट हम लोग ने 80% 100 पिप पे क्लोज कर लिया था, क्योंकि वो हमारा इनिशियल टीपी था। ओके, ये एक ट्रेड हो गया। ओके, लुक एट दिस ट्रेड। अब मैंने कल भी लाइव में बताया था कि मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ और वो अगर ड्रॉ डाउन में जाता है, तो यूजुअली वो पूरा टी एसएल हिट होना कंपलसरी है, फिर देखो, ठीक है, यहाँ पे भी देख लो, एक बार ड्रॉ डाउन में गया, एसएल हिट हुआ है। यहाँ पे ड्रॉ डाउन में गया, बट इट वाज अ क्विक मूव बैकअप, बट वो वॉल्यूम टाइम था एट द सेम टाइम, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल ये देखो, ठीक है, माइनर ड्रॉ डाउन, सीधा सीधा टीपी हिट है, ठीक है, माइनर ड्रॉ डाउन, टीपी हिट है। ओके, देन यहाँ पे देखो, ड्रॉ डाउन एसएल हिट, ड्रॉ डाउन एसएल हिट, ड्रॉ डाउन एसएल हिट। हाँ, बट ये दिन पे है ना 50% हम लोग क्लोज कर देते थे एट सम पॉइंट, ठीक है। फिर यू टेक अ लुक एट दिस कंसोलिडेशन, एसएल हिट, एसएल हिट, देख रहे हो, मतलब जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ और अगर ड्रॉ डाउन में जा रहा है, ओके, इसमें देख लो, यहाँ पे एंट्री ली, सीधा ड्रॉप, टीपी हिट, ठीक है, एंट्री ली, सीधा ड्रॉप, टीपी हिट। सो इट इज लाइक दैट, कि मेरे मेरे को इतना समझ आ गया कि मेरे जो ट्रेड्स है, दैट वर्क्स रियली वेल व्हेन इट डजंट गो इन ड्रॉ डाउन। जैसे कि ये ले लो एग्जांपल, कहाँ ड्रॉ डाउन है इसमें,
अब ये टीपी हिट होगा या नहीं, ये मैं 100% सिक्योर नहीं, लिख के नहीं दे सकता इधर, या बट मेरे को कॉन्फिडेंट है इधर कि यू नो टीपी हिट हो सकता है, वरना मैं 80% ही सिक्योर इधर कर सकता था. Like I use negative RR, trade more like Raja Bank, but now I want to move to RR thing, But to hold trades is difficult as me, I'm a scalper and day one. See, someone like me, मैंने राजा बैंक को, bro, that guy I admire him. मैं जब से ट्रेड करना, सबसे पहले लाइव स्ट्रीम जिससे मैंने सीखा है ना, दैट इज दैट गाय. ओके, तो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है, एंड आफ्टर दैट आई हैव चेंज माय स्ट्रेटजी. अब सबका रिस्क टॉलरेंस, सबका स्ट्रेटजी सेम नहीं हो सकता, उसका माइंडसेट के लेवल पे तुम मैच नहीं कर सकते. तो उसकी जो स्ट्रेटजी वो उसके माइंडसेट के लेवल पे मैच करती है, उसके इमोशंस पे मैच करती है. ओके, तो यू कैन नॉट ट्रेड विद द सेम थिंग. ओके, एवरीवन हैव अ डिफरेंट माइंडसेट, डिसिप्लिन, रिस्क टॉलरेंस, सब डिफरेंट होता है. उसकी लाइफ डिफरेंट है, हमारी लाइफ डिफरेंट है. ओके, लोग बोलते हैं ना कि साइकोलॉजी इज नथिंग. बेसिकली तुम्हारी डेली लाइफ में हाउ यू आर अ पर्सन, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट इन ऑल्सो ट्रेडिंग. ठीक है, अगर तुम ऐसे इंसान हो जिसको जल्दबाजी करना पसंद है, लाइक यू कांट वेट फॉर थिंग्स एंड यू वांट टू डू इट फ्रॉम द डे वन, देन यू आर अ स्कैल्पर बेसिकली. ठीक है, यू आर समवन हु लाइक टू वेट आउट थिंग्स, कि यू आर पेशेंट इनफ कि जहाँ पे तुम रिवॉर्ड का वेट करते हो. That guys can be a day trader and a swing trader. Okay, so it does affect on your day to day routine. That's why also Raja Bank said sometimes कि discipline होना is important. तो मेरे according that guy have a different risk tolerance. And right, another thing I'll say, पहला, अगर तुम राजा बैंक से सीख रहे हो, उससे सीखो कैंडल थिंग, कैंडल पैटर्न्स. उससे बेटर तुम्हें कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा कि कैंडल स्टिक कैसे वर्क करता है. आई कैन बेट ऑन इट राइट नाउ. मैंने जितना उससे कैंडल स्टिक के बारे में सीखा है ना, तब सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट इज कैंडल स्टिक. एक बार तुम वो सीख गए, देन यू नीड टू मॉडिफाई टू फिर तुम दूसरे कॉन्सेप्ट्स देखो. देयर आर मल्टीपल कॉन्सेप्ट, बैक ऑफ थियरी है, ये तुम्हारा SMCR, स्मार्ट राजा कॉन्सेप्ट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है. ठीक है, हर एक ट्रेडर के खुद के एक कॉन्सेप्ट है. तो एवरी वन हैव देयर ओन डिफरेंट वे ऑफ ट्रेडिंग, बट तुम सबका फॉलोअप नहीं कर सकते. सो बिल्ड योर ओन थिंग, लुक एट देम कि वो क्या डिफरेंटली कर रहे हैं, एंड व्हाट काइंड ऑफ अ स्ट्रेटजी यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर एंड पुट इट एज योर ओन. ठीक है, मॉडिफाई करो उसको थोड़ा. अगर तुम्हारा उसका टाइम जोन अलग है, तुम्हारा टाइम जोन अलग है, उसके अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करो. मार्केट में जब तक तुम टेस्ट करोगे ना, टेस्ट एंड रिपीट, सिंपल इज दैट. कि अभी तुम फॉर एन एग्जांपल एक रोबोट बनाना है, ठीक है, पहली बार में क्या सक्सेसफुल जाएगा? नहीं, तुम लोग टेस्ट आउट करोगे, कभी हाथ टूटेगा, कभी पाँव टूटेगा, कभी ब्रेन फंक्शन नहीं करेगा. यू अंडरस्टैंड क्यों? धीरे धीरे एक एक पार्ट जब प्रॉपर फंक्शन करने लग जाता है, देन द होल थिंग इज बिल्ड. सो सिंपल एज दैट. थैंक यू मैन, थैंक यू. Okay, 30 minute will be closing in 1 minute. 1 minute, 1 minute. So here's the thing, अगर ये रिस्पेक्टली रिस्पेक्ट करते क्लोज होता है हाई को, व्हाट डू यू सी नेक्स्ट? नेक्स्ट कैंडल विल ओपन अप, विक डाउन, मे बी हमारे एंट्री पॉइंट पे जा सकता है वापस, इसलिए मैंने ब्रेक इवन नहीं किया है. एंड देन इट कुड फिल अप द होल थिंग. अब ये फिर नेक्स्ट कैंडल कैन ऑल्सो पुश स्ट्रांगली टू द अपसाइड. इट कुड ऑल्सो पुश अपसाइड, रिजेक्ट एंड ब्रेक द लो. तो लेट्स सी कि कैसे मूव आउट करता है प्राइस. बिकॉज 1 आवर का भी क्लोजर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ 1 आवर भी क्लोज हो रहा है, इट्स क्लोजिंग लाइक दिस. सो इट्स ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक थिंग. बट हम लोग अगर 4 आवर पे देखें, तो इट्स अ न्यू 4 आवर. उसने अभी तक हाई ब्रेक नहीं किया है, एंड आई फील लाइक प्राइस विल ब्रेक द हाई, बिकॉज हमें ये स्ट्रक्चर के ऊपर क्लोज मिला है, एंड दिस कुड बी जस्ट अ कंटिन्यूएशन पैटर्न. ओके, तो हम जस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम लोग ने ट्रेड लिया है, एंड वी आर जस्ट होल्डिंग दैट. अब मार्केट के ऊपर है कि व्हाट इट डज, वी कैन जस्ट मैनेज अवर रिस्क. ठीक है, मैं उससे ज्यादा इस कंडीशन में कुछ नहीं कर सकता हूँ. तो बी रिस्क फ्री एंड बी पेशेंट, दैट्स इट. एंड लेट्स सी, what do you
Guys, hit the like here. I don't see any likes on the stream. If you're watching and you like me and here doing live stream and talking about things, तो like करो यार, because see जितने ज्यादा लोग आएंगे ना उतने मजा आएगी, to be honest. उतनी हम है ना कर सकते हैं कुछ, उतने ही हम. ओके, छोटा सा बॉटम विक बनाया है एंड इज ट्राइंग टू फ्लिप, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि इतना छोटा बॉटम विक पे ये फ्लिप करेगा नहीं करेगा. ये अगर लॉन्ग विक बनाया है ना यहाँ तक, तो देर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि हम हाई ब्रेक करें एंड पुश करें. बट अगर ये इमीडिएटली यहीं से हाई ब्रेक करके पुश करेगा तो देर आर चांसेस कि वो वापस नीचे आ सकता है. अनदर थिंग यू हैव नोटिस्ड, अगर तुम लोगों ने नोटिस किया हो तो, मैंने ये जोन ड्रॉ किया जब प्राइस यहाँ पे था. जब प्राइस यहाँ पे था तब मैंने ये जोन ड्रॉ किया. मैंने क्या बोला था, यहाँ से प्राइस रिजेक्ट कर सकता है. मैं कोई फ्यूचर देख के तो आया नहीं था, ठीक है. सो इज जस्ट पार्ट ऑफ माई स्ट्रेटेजी टू नो कि कहाँ पे 50% क्लोज करना है, कहाँ पे मुझे सिक्योर करना है, कहाँ पे मुझे होल्ड करना है. बिफोर यू गो इन द ट्रेड, प्लान योर ट्रेड इन योर माइंड कि कितने सिनेरियो बन सकते हैं ये ट्रेड को प्ले आउट करने के लिए, ठीक है. तो इधर जो बंदा ओवर थिंकिंग कर रहा होगा ना, उसको क्लियर क्लियर आइडिया आ जाएगा कि प्राइस क्या करने वाला है, समझ रहे हो. कि एक बार तुम्हें वो पता चलता है ना कि ओके यहाँ पे क्यों रिजेक्शन ले रहा है प्राइस. मैं सिंपली बोलूँ तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शंस मिले. यू सी यहाँ से प्राइस ऊपर गया, इमीडिएटली रिजेक्ट किया. यहाँ से वापस प्राइस ऊपर गया, इमीडिएटली रिजेक्ट किया. अनदर रिजेक्शन, ऊपर गया, वापस वो रेड कैंडल. ठीक है, दिस इज द ओनली वन टाइम दैट प्राइस हैव मूव एंड टॉप हियर, बट फिर वापस फॉल तो आया है बड़ा. ओके, सो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से रिजेक्शन आना वॉज मैंडेटरी, ठीक है. अब दैट इज रियली अ कोइंसिडेंस कि 30 मिनट भी यहीं क्लोज हो रहा है, 1 आवर भी यहीं क्लोज हो रहा है. एंड अब अगर ये लॉन्ग विक बनाए, बॉटम विक बनाए, कुछ भी करे, ठीक है, उसके बाद अगर ये फ्लिप करेगा तो दैट विल बी विथ वॉल्यूम एंड आई थिंक इट कुड कंटिन्यू पुशिंग अप टिल 4650. और गोल्ड को है ना, कभी भी अगर ट्रेंड में है वो, अगर वो नीचे गिर रहा है तो प्लीज डोंट ट्राई टू कॉल इट आउट अ टॉप और अ बॉटम. उसमें सिर्फ तुम फंसोगे. अभी कुछ लोग होंगे जो ये ऑल टाइम हाई देख के ओके यहाँ पे प्राइस एक बार फॉल हुआ है, दूसरा फॉल हुआ है, यहाँ पे तीसरी बार भी फॉल आ सकता है, ऐसा सोचने वाले भी लोग होंगे, ठीक है. यहाँ पे सेल लेंगे, एसएल इतना बड़ा रखेंगे एंड थिंकिंग टारगेटिंग दिस लो, ठीक है. कंफर्मेशन किधर है उनका, मेरा सिंपल क्वेश्चन है. क्या कंफर्मेशन है कि यहाँ से प्राइस गिर रहा है? फंडामेंटल बैरिश है? नहीं. इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है? नहीं. तो तुम किस बेसिस पे बैरिश जाने का सोच रहे हो? टेक्निकल बेसिस पे क्या हाई बनाया तो लो बनाएगा? बट हाई अगर लो बनाएगा, राइट, तो उसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना, रिजेक्शन आने चाहिए ना. मेरे को तो रिजेक्शन नहीं दिख रहा है, मेरे को तो सिर्फ स्ट्रक्चर प्रिंट होता हुआ दिख रहा है. सिंपली बोलूँ तो ये लो था, ठीक है, नई कैंडल ऊपर आई है, ये इधर स्ट्रक्चर बनाया है, वापस हाई बनाया, वापस लो बनाया, स्टिल लो को रिस्पेक्ट करा, इधर हाई बनाया, लो बनाया एंड इट्स नाउ क्रिएटिंग अगेन अ हाई. हाँ, यहाँ से ये ऊपर नहीं गया, मैं यहाँ से ये भले ही इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिया, बट एट द सेम टाइम वो प्राइस का लो रिस्पेक्ट कर रहा है. दैट इज गुड कंफर्मेशन फॉर मी टू एक बार ये हाई ब्रेक करेगा, समझ रहे हो. तो जस्ट बी प्रेजेंट व्हेन यू आर ट्रेडिंग, के ब्लाइंडली ट्रेड मतलब. और फॉर एन एग्जांपल मैंने बोला था यहाँ, तो यहाँ से रिजेक्शन आएगा. द रीजन मैंने यहाँ से रिजेक्शन का बोला था, बाई लेने का बोला था, इज बिकॉज कि हमें ऑलरेडी 2 बार यहाँ पे रिजेक्शन आ चुके हैं सिंपली, ठीक है. एंड दिस इज द लास्ट स्ट्रक्चर जहां से अगर प्राइस ब्रेक करेगा, आई कैन सी इट फॉलिंग टिल हियर. अब एट द सेम टाइम अगर ये यहाँ से रिजेक्शन लेने वाला है, ठीक है, तो इट विल जस्ट कंसोलिडेट एंड देन मूव अप, ठीक है. तो वो बहुत टाइम लेता.
Yes bro, I was the one who was thinking कि 300 पिप्स चला गया है and 600 पिप्स गया है, अब गिरेगा, but I learned the lesson hard way and why gold moved crazy like 2500 3000 pips in a single day. Bro, trust me, मैं वो, you know, I had that thinking, ठीक है, and after that I'm giving this ज्ञान to you guys कि why you should do that. मैं भी पहले ऐसा सोचता था कि प्राइस यहाँ तक तो आ चुका है भाई, अब गिरेगा ही, बट वो मेरे इमोशंस के बेस पे बोल रहा हूँ ना, टेक्निकल किधर है, फंडामेंटल किधर है भाई, कुछ तो मैथमेटिकल जाना चाहिए, नहीं ये मेरे इमोशंस पे तो चल नहीं रहा मार्केट, चल रहा होता तो मैं प्रॉफिट कर लेता अभी। हाँ, कभी कभी वर्कआउट करता है, कभी कभी तुक्का वर्कआउट कर लेता है, इमोशनल ट्रेडिंग भी चल जाती है, बट कभी कभी चलती है ना, इसलिए तो मार्केट सेंटिमेंटल करके भी एक काइंड ऑफ अ थियरी बनाई है कि उसके बेसिस पे भी लोग ट्रेड करते हैं। मार्केट सेंटिमेंटल थियरी इज समथिंग के, लेट मी शो यू, मैं शायद डिटेल में तभी एक्सप्लेन कर पाऊँ जब तुम्हें गूगल के थ्रू बताऊं। See, there you go. It's invest in emotions and attitude. Okay, so basically, for an example, let's talk about retail and what we call इंडस, जो बैंक्स और ये सब होते हैं उनके बेसिस पे, ठीक है। अब सिंपली देखें तो मार्केट के सेगमेंट्स देखो कहाँ पे है पहले वो, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल, अगर हाई है, लो है, और अब तुम सोचो एज अ रिटेल ट्रेडर, लोग क्या सोच रहे होंगे, मेजोरिटी लोग क्या सोच रहे होंगे, जो वो सोचेंगे उसके अपोजिट करेगा मार्केट मूव, ठीक है। यहाँ पे मेजोरिटी लोग सोच रहे होंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, बट वो ये भूल गए कि ट्रेंड बुलिश है, फंडामेंटल बुलिश है, ठीक है। ये भूलने के बाद वो लोग यहाँ पे सेल लेंगे, बोलेंगे हमें टॉप से एंट्री मिल रही है, घंटा टॉप से एंट्री मिलेगी तुम्हें, अभी एसएल भी मिलेगा उसके साथ साथ। अभी जो लोग टॉप से एंट्री लेंगे, फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ से सेल ले लेता हूँ, एसएल कहाँ रखूंगा मैं, प्राइस पास में कुछ है ही नहीं, है ऑल टाइम हाई पे अभी। अगर मैं एसएल अभी रख दूं कि 100 200 पिप्स का फॉर नो रीजन समझ के, अभी कोई पॉइंट ही नहीं है ना, मतलब वो तो पूरा एसएल हिट ही करेगा फिर, अगर ट्रेंड बुलिश रहा तो, कंटिन्यू रहा तो। मतलब आई एम तो जस्ट होपिंग कि मैं, ठीक है, मैं 100 पिप का मूव दे इधर, 100 200 पिप का एसएल दे देता हूँ, ठीक है, थिंकिंग के पूरा मार्केट यहाँ तक आएगा, बट वो तभी करेगा जब फंडामेंटल चेंज होंगे, फंडामेंटल चेंज होंगे तभी होगा सर। तब जब तक वो चेंज नहीं हो रहा है तब तक हाउ कैन यू प्रेडिक्ट कि मार्केट नीचे आ रहा है। Okay, price is breaking the high here, 15-minute high is about to be done, and so as well as 30-minute. Let's see how what kind of a push we can get after this. हाँ, वही वही, एज लॉन्ग एज दुनिया में जब तक केओस रहेगा, समथिंग लाइक ट्रम्प इज डूइंग, तब तक गोल्ड ऊपर कंटिन्यू ही करेगा, बिकॉज गोल्ड लाइक केओस। जब तक, सी, सिंपल चीज है, जब तक लोग मरेंगे, जब तक लोग जॉब नहीं मिलेगी या उनके पास पैसे नहीं रहेंगे, इकोनॉमी अनस्टेबल रहेगी, वो गोल्ड को पसंद है भाई, क्लियर सेंटेंस में बोलूँ तो। नेचुरल डिजास्टर्स, थिंग्स लाइक दैट, कोविड एंड ऑल, ये सब चीजें गोल्ड को पसंद है, क्लियर क्लियर बोलो तो। उसके बाद मेनली गोल्ड प्राइस मूव अप करता है, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम जैसे ही मतलब समझ लो कि इकोनॉमी स्टेबल होगी, इकोनॉमी में पैसा कंप्लीटली चलता रहेगा एंड ऑल, ठीक है, प्रिंटिंग नॉर्मलाइज हो जाता है एंड ऑल, इंटरेस्ट रेट बेटर हो जाते हैं, तो उसके बेसिस पे गोल्ड विल फॉल, तो इसके अकॉर्डिंगली वो पुल बैक लेगा। अब अगर मैं चार्ट की बात करूँ ना, लेट्स जस्ट, आई डोंट थिंक सो आई कैन गो, बट लेट्स सी। अभी तुम ये देखो, 2019, लेट्स अबाउट थिंक फ्रॉम 16, ठीक है, व्हाट डू यू सी, दिस प्राइस कंटिन्यू पुशिंग अप,
बट एट द सेम टाइम लाइक फॉर मी दिस इज अ रेंज, ये जो है एक रेंज है, ठीक है, जहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट करी थी 2018-19 तक, ओके, 18 तक। अब देखो 18 एंड एंड होते होते वी गॉट अ बुलिश मोमेंटम। अब मैं सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, 1920 में क्या हुआ था, ठीक है, 22 में क्या हुआ था, तब से क्या चल रहा है ये सब। मैं तुम्हें एक एक रीजन दे सकता हूँ कि ये क्यों गया ऊपर। डू यू हैव एनी आइडिया कि ये क्यों एक एक साल में वाई दिस ह्यूज पुश अप। मेरे को रीजन बता दो एक एक साल का तुम कि क्यों गया है सर। बिकॉज लोग ट्रेडिंग करते हैं भाई, बट दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर टू नो कि गोल्ड की प्राइस क्यों, अभी सिल्वर की प्राइस क्यों मूव कर रही है भाई इतना स्ट्रांगली। तुम एक फैक्टर समझो ना कि गोल्ड की अगर 4006 पे है और सिल्वर की $50 पे चल रही है, वाई इतना वास्ट डिफरेंस क्यों है। अब सिल्वर की बेसिकली जो सप्लाई थी वो ज्यादा थी कंपेयर टू गोल्ड, ठीक है, बट एट द सेम टाइम गोल्ड की जितनी डिमांड है उतनी सिल्वर की भी ही डिमांड है। इन दैट टर्म्स की कंपनी देखो, फोन, तुम्हारे गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, वो सब उसमें कहीं ना कहीं सिल्वर यूज होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो चिप्स या चीजें बनती है फोन की, उसकी वहां पे सिल्वर यूज होता है। और अगर सिल्वर यूज हो रहा है, ठीक है, तो एक टाइम आएगा जब सिल्वर की सप्लाई कम होगी, बिकॉज इट्स अ रेयर यू नो मटीरियल जो अर्थ में से निकलता है। एक टाइम आएगा जब वो नहीं रहेगा, ठीक है, एक टाइम आएगा जब उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, जो बचे होंगे वही यूज करना पड़ेगा। व्हेन दैट टाइम कम्स, व्हाट डू यू थिंक प्राइस विल डू। जाएगा ऊपर, $200, $300, $1000, $1,00,000। ऑफकोर्स ही बात है, क्योंकि उसकी अब डिमांड बढ़ चुकी है कंपेयर टू द लास्ट ईयर। सो मेरे अकॉर्डिंग है ना, it's really important कि you also check the fundamentals at the same time technicals. All right, so price तो जा रहा है ऊपर ऊपर, let's see। अब हम एकदम ऑल टाइम रेजिस्टेंस पे है, ऑल टाइम हाई पे है। अगर ये यहाँ से ब्रेक करता है गाइस, तो हमारा टीपी तो यहाँ पे हिट हो ही जाएगा 100 पिप का। बट स्टिल मैं मेरा ओपन रख रहा हूँ फॉर नाउ, एज लॉन्ग एज द वॉल्यूम इज देयर। जैसे ही वॉल्यूम ऐसा लगेगा कि नहीं थोड़ा कम हो रहा है या प्राइस इज रिजेक्टिंग एंड थिंग्स लाइक दैट, तब तक हम देखेंगे, लेट्स सी। बट आई एम तो एक्सपेक्टिंग कि ये माइनर पुल बैक ले सकता है, ऐसा कुछ कर सकता है, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइस यहाँ से स्ट्रांगली पुश करे।
The reason I'm looking at the 1 minute time frame is because I think like we can get a strong bullish candle. So let's see if we can get that. but ठीक है, हम 5 मिनट पे भी देख सकते हैं. 5 मिनट पे भी क्लियर प्राइस एक्शन और स्ट्रक्चर्स है. यू कैन सी बुलिश बुलिश बुलिश. हम लोग ने कल न्यूयॉर्क की ट्रेड जर्नल की है क्या? लेट्स सी. आई थिंक सो, हाँ किया है. न्यूयॉर्क की भी ट्रेड जर्नल तो किया है. किया है. ठीक है. अभी हम बाय द एंड ऑफ द न्यूयॉर्क सेशन ही ये भी जर्नल करेंगे, सी के कितना बनता है. बिकॉज न्यूयॉर्क में प्रॉफिट लॉस क्या हो रहा है वो भी देखना पड़ेगा क्या. मेरा दोस्त बोल रहा है कि ईरान की करेंसी गिर गई. मैंने बोला उठा ले. ओके, लेट्स गो. 15 मिनट क्लोजर में हमें 15 मिनट क्लोजर अभी मिला है. ओके, ऑलरेडी हम स्ट्रक्चर के ऊपर क्लोज तो कर रहे हैं, बट क्या हमें पूरा पूरा बुलिश कैंडल मिल सकता है क्या? ए लाइक ठोको तुम लोग. तुम लोगों ने अभी तक लाइक नहीं ठोके. जो लोग देख रहे हो ना, लाइक करो. Why don't you use trailing SL now? I can trail my SL, but okay, here's the thing. Let's take a look at the 1 hour. I need to take a look at the 1 hour. The reason is because if this 1 hour go bearish, okay, then have a room to fill up this level. But at the same time, I can say that it also have a room to reject this level. Okay. Now I have already closed 50% here. Now, even if it hit my SL, what I'm losing? The profit that I made today on this trade. Now I'm willing to take that risk is because price is at all time high, and if we break this, we can get a boy just a great move here. So I'm willing to take that risk here. You see that the way right now it's moving, if we break above this and if we get a really good candle, then we can move up. You see, let's see. Let's see. In a minute we will know, in a 10 minute or so, because the thing is like 15 minute and 5 minute is also at the resistance, like at the top. I'm just That's why, see, I would have trailed my also SL here if I'm going off the charts. I'm not going off the charts, I'm looking at it right now, so there is no need for me to trail the SL. And even if we get a sudden movement like to the downside, just a one candle boom to the downside, I'm still getting my SL, right? So it will be cut off there, right?
Sorry. Yeah. So yeah, price is still, rejecting. We got already got three rejections. I guess price is going to move. Yeah, it is rejecting though. 1 hour is, we have 37 minutes, right? 4 hour, did we break the high? We have not. We have just made an equal high, but we have not break it. We are getting volume. Price immediately moved down. Now here's the thing. This is the last leg where if we break below this, we can directly go to break even. So now I don't have any option to do this, but I'm gonna move my SL at BE because we got one strong rejections. If price doesn't move up now, then it will just drop, right? So let's just put everything at break even, guys. And all right, so price is still pushing a little bit. How many pairs do you focused on? Mainly, I focused on gold and silver. I don't trade any other pairs here, but I just, keep a watch to them. That's it. Usually, I do keep a watch to the major pairs, but I don't trade them because it's really important to master one pair before you go on others. I miss the trade now. I'm just enjoying it by watching it how it behave. That is good. I am also thinking to secure some, but the reason I'm not securing 80% there is because I still feel like price could, take out the highs. So I'm willing to take a chance here to take out the highs. As long as we are in a bullish structure, I have no issue because see now I'm at a break even. Okay, now I already made the profit and all, so I don't want to do anything here. If it moves, it moves. If it doesn't move, it's fine. Let's see, like we have half hour or so, but I missed the trade, missed the trade. Remember, like this is just a minor pullback. Okay, we have moved here around how much? We have moved around 150 pips, and then we are getting a 25 pip of a pullback. That shouldn't be, scared you. Brother, where are you from? I'm from India, भाई. I'm from India. इंडिया में अगर बोले तो गुजरात से टेक्निकली तो यूटीसी जीरो बता रहा है टाइम फ्रेम टाइम कहाँ पे यूटीसी जीरो बता रहा है मतलब व्हाट डू यू मीन तुमको टाइम किधर दिख रहा है इधर करंटली जो लाइव टाइम दिख रहा है 2:56 p.m. दैट इज एन इंडियन टाइम जोन इट्स नॉट एनी अदर टाइम जोन
यार ये है ना, ये मेरे को लग रहा है अभी टाइम लेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है इट माइट टेक अराउंड मोर देन 2 to 3 minutes। अगर इसी इन लास्ट 2 मिनट्स अगर ये डोजी क्लोजर दे रहा है तो खत्म है, फिर बहुत लाइक नेक्स्ट 30 मिनट हैव मोर रूम टू पुश डाउन, देन गो बैक अप एंड ब्रेक द हाइस। एंड अगर हम लेट्स से 15 मिनट पे भी देखें तो आई फील द सेम, ये एक बैरिश कैंडल दे रहा है रिस्पेक्टिंग दिस लोस, मे बी माइनर जस्ट थिंग्स लाइक दिस कि लो बनाया इसने, हाई बनाया एंड इट्स डूइंग अ माइनर रीटेस्ट ऑफ दिस जोन, then could be a possibility with a new candle we can see a push up. Okay, but I'm still expecting a push to the upside. I'm not changing any rules here. So let's see. Morning we took almost the same trade, but I got in early. Oh yeah, right. You shared in the Discord group, right? Yeah, that is right. Journal. Yeah, see, this guy also took the similar trade here. We can see that his buying entry is around 4622, and he took an early trade is around this level, but I took it from here in London session. Bro, you know what? I would have taken a similar entry, but I waited for price to tap into this 17-18 level before moving up, but it's fine. Let's see. देखते हैं, let's see how it's done. All right. So 30 seconds. Let's go. 30 seconds and the price will be closing. 30 minute will be closing, and it's not closing respecting. That is another bad, bad. Let's see. If this close respecting the previous candle high, then I can, see the next candle pushing strong. But it still did close bullish. That is another good thing. Now we just want it to create a bottom wick, tap into the zone that we have marked, where we close our 50% basically. So basically, I want it to break the 50 minute candle low, create a this, and then boom, push up. Let's see. Tell me one thing. Have you guys liked the live stream, or I am just the one who cannot see the live stream you have liked? I don't know. No, you guys have not liked the live stream. That is bad, man. I told you guys to like the live stream. All right. अगर ये हाई ब्रेक करता है, ठीक है, देन आई नीड अ फुल सपोर्ट, आई नीड अ फुल सपोर्ट ऑन द लाइक्स, ठीक है, लेट्स सी, अगर ये हाई ब्रेक करता है देन यू गाइस विल लाइक, एंड इफ नॉट देन आई लूज योर लाइक्स। राइट, मेरे को लग रहा है ये रीटेस्ट ले रहा है जोन का। Amazing, thank you, man. Okay, 50 minute have broken the low. Rejection is not there yet. We need a strong rejection. This is not that rejection we should expect. Price could still move down. Tap here, here. Okay, let's see. I think the major rejections I see here on the price right now
is this levels, so it's really near to our entry point. And if we have 1 2 3, this is the below 4 5, so we got multiple rejection here. Interesting. Now the thing is, like, I don't want to hold a trade and want it to go break even again. So either we closed. Okay, either we closed. I bet it's building liquidity. Possibly. Let's see. Okay, here's the thing. Okay, according to me, what I'm thinking here, once we break this high, let it move down. We can just see how much it does move down. But once we, break the high here, then I'm gonna close my, you know, another 50% or so at around 130 pips or 20 pips. Okay. Then I'm gonna let the rest run. Okay, let the rest run on a break even point. See how much it can move up. All right. So let's see how much it can move up. Because this 30-minute, this 1 hour candle, it just broken the high and it's now going bearish again, which I don't like, to be honest. But at the same time, with this 30-minute candle, it can also push to the top side. It's already tapping into our zone. Now the thing all we need to wait for is the rejections. If price doesn't reject, then yeah, then price won't bullish. The way in a single candle it just moved down, doesn't look like it will reject though. What do you guys think? Let's go to 1 minute time frame. Yeah, it is moving strongly. We in the past I can see that once price consolidated, we can see a drop. So here's the thing. I think like price, even if it does drop, we have multiple rejections point. I can see. So let's see. But I'm gonna hold the trade, to be honest. I'm gonna hold it here. Let me see. Yeah, that is totally possible. You see, okay, we started moving up from here after this consolidation. We got around 110 pip of a move. We are getting a minor pullback of around 50 pips. So even if it does get a pullback around 70 pips, it's fine, but then we should see a strong rejections. But let's see. Right now, I'm seeing that it is grabbing some liquidity from lows. This is a level, this is the last level. Okay. So this is the last level. We can see some rejections. If price doesn't reject from here, then there is no way price will reject. Price can also tap into this zone, but I don't want to hold it till then. We'll see. All right, tapping into our zone here. Going to take out, I guess. Ooh. We just tap into that wick and got a minor rejection. Can that minor rejection be a strong rejection? No, it's just a new minute candle. So no, not a rejection. Oh, you know what? Let's just put this here, okay? Because of the structure, I want to put it here. So let's see. Triple top. No, I don't consider this. I don't, trade triple top or something like that, to be honest, because I am just seeing this price have rejection. Okay.
but at the same time, we are still a bullish trend. We have never broken the low of a previous low. So I feel like triple top is somewhere where price is, something like this, right? So you see price move up, okay, rejected once, same area tap again, okay, rejected one again, then again the same level should be rejected again. This is the triple top, right? Now the structure I am seeing right now is price moved up, moved down immediately, respecting this level, moved up, created a minor high, moved down, created a minor high. Now here, this last top, we have not broken the high. So we are doing this right now. Now, if we can do this, or we can just drop. Two things we can do. So these are the two structure I'm looking at. But again, as I said, on a 5 minute time frame, we are rejecting this level. So in a 2 minutes, if this candle flows doji, if the current 5 minute candle flows doji, then yeah, prices can move up. 15 minute. The thing is that whenever the price have moved down from here, it's really strong. But at the same time, I can see that 4 hour now have a really good top wick, which is a problematic thing. Meaning, if this candle close doji or some bearish, next candle can push down, break the daily low, and tap into the zones. So now, if you are someone who's taking a sell or things like that, then now this is a point where you can see, okay, price didn't break the high, it respected the high here, then flipping bearish. Now what we need to see is break of this low. If we get the break of this low, then we can see that price may push down. But as long as we are respecting it, no, there is no way you can see that price can push. Okay, in a last minute candle, can this last minute candle be a strong bullish momentum candle? Can it be? Or cannot? It cannot be. Okay, I can just I feel like price is just playing, cannot I cannot wait any longer than this. Just take out the zone, bro. Now 30 minute is also strongly moving down. This is the last low. This is the last low where price can reject. But then other than that, I don't see price can reject then after that. Okay. If this 5 minute uh if this 5 minute is does not go below the lows, then this could be the whole pushback up. But that means that 15 minute will also be closing like in prospecting in this levels that we have marked, we want that. Yeah, so doesn't look like that it will do. You might need to close it out. As long as you don't see price slowing down in momentum, that means volume is strong in the bearish side. Okay. We got close out just now. There we go. We are done with the trade, to be honest, but I'm just monitoring how low price can go here.
Ooh, look at that. I told you this is last low. So tapping now, tapping into the major levels. Minutes. I'm gonna wait 2 minutes. Okay. Uh, Before ending the live stream, if you guys have any last questions, please do ask right now. Other than that, we will see you in NY session. We have a guest coming in, so please do join at the NY session. I'm pretty sure you will love it. Okay. So that's it. Before I go, any last questions? We have around 2 minutes left before I end the stream. So this is the level it tapped and rejected. But we have 2 minutes, right? In 2 minutes, I'm not expecting price can just move up. I don't think so. It will, though. It could definitely push down, but I don't see it moving up now. Oh man, let's see. But at the same time, next 15-minute candle can. So understand this, okay? This is the level. If price next candle move, okay, next candle open up, break its own low, and reject and immediately push up, then that is a different story. But I don't see price now pushing all the way to the top. So this is like a something we done in past. Whenever price is creating a high, if we are rejecting heavily, we created a high, we rejected, boom, created a high, rejected, boom, created a high, rejected. Now, are we going to respect the low, or are we going to boom, boom? You know, are we going to do this? Are we going to respect the low and push up again? That is a question. What do you guys think? Okay, 15 minutes is closing in around 7, 8, 9, 10, 4, 3, 2, 1, and there we go. New candle opened up. If we don't break the low and push up, I don't like that. If we break the low and push up strongly, that I want to see. It doesn't look like it will, to be honest. Because after the huge bearish candle, you cannot expect that price will, all move all the way to the top. Yeah, we have done that in the past, but still, you cannot expect it will do it again. Okay, we did break the low. I just want to see first 5 minute candle how it's moving here. I think if price moves up, then we can max to max we can see around 60 pip of a move. But at the same time, you need to put SL below this lows here.
We might. I feel like that 5 minute is closing as a doji. It's not proving at all. But let's see. I'm just waiting another 2 to 3 minutes to see how first 5 minute candle is moving. Just seeing how strong of a zone I have here. Okay, interesting. 5 minute is about to close in around 2 minutes, and price is not moving up, but it's not pushing down. All right, we are seeing the push now. In the last 2 minutes, we are seeing the bullish momentum coming in. This is the level again, okay? If this is the trade, then this is the level again. Can we get that? Can price push that much to the upside? Keep in mind, this is just you know, we are just looking at the chart right now. Our trade is done, okay? In a minute, we'll know. If this candle closed doji again, then there's a huge possibility price will move down, okay? But if it closed bullish while breaking the previous candle high, then we have a huge possibility price can push up. That's what I'm thinking. In 20 seconds, we will know. Put the timer. There we go. In last 10 seconds, price is rejecting. We got a closure. It's a bullish closure. Now, the thing is that we want a strong push up. There we go. There we go. That's what I'm talking about. Now, this won't last, to be honest. This candle won't last. It will just immediately push back down. So, if you have not closed your break even, you can now. But anyway, as I expected, price did move up. Eventually, I just wanted to see which of my levels are more strong in terms of rejections. So I see one thing that price first broke this strongly. We didn't respect it. We just had a minor rejection of this level. After breaking that level, pretty sure this won't be respected. And this is the level that got respected, and also the last consolidation zone. So it does make sense, to be honest. Amazing. It's totally fine. Totally fine. Now the only question is, I don't feel like price will break the highs and push to the all-time high again. But this was a good trade in terms of closing and all, because 1 hour is bearish, so as well as 30 minute all just push to the lows here. The more you can see is price coming up around 4633, not more than that. Okay, so this in this 8 minute, if price push up, you can see it around coming up around the same level. That's it. Other than if this push all the way above this level, then we are getting all time high again.
बट मेरे को पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है टू बी ऑनेस्ट. इट्स रियली रेयर पॉसिबिलिटी दैट प्राइस यहाँ से ऑल टाइम हाई पुश करे. ठीक है, सी दैट्स व्हाट आई सेड कि ये लास्ट नहीं करेगी कैंडल. It just immediately pushed down and price is now coming back down. I don't. Anyway, I'm going off the stream. Otherwise, I'll be just keep looking at this and seeing like what price will do. But we got a rejection. Now, if price move up or down, whatever it does, it's totally up to you guys, and manage accordingly. So we'll see you in your session. Thank you for joining this live stream session. I hope you liked it and enjoyed. Have a good day and don't overtrade. All right.